Rationalize the denominator of the following. the denominator Of the following. of the following. Okay. चलो क्वेश्चन क्या था? 1 by root under 7. 1 by root under 7. root 7. Yes sir, यही क्वेश्चन है. 1 by root 7 only. Yes sir. Yeah. Okay. So see, thing is very simple there. 1 minute. So see, I think the last two session we are discussing regarding the rationalization. Correct. So here also rationalization in the sense मैंने जब जैसे today I have discussed regarding logarithm. Correct. कि अगर मैंने 2 power 8 suppose 2 power 3 को 8 या 8 को हम 2 power क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 7 को हम 2 के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड? सो ऐसे अगर अनसॉल्व क्वेश्चन है कि ऐसे में तो मुझे कोई दूसरा ऑप्शन तो जाना पड़ेगा. करेक्ट? कि मुझे तो इसको सॉल्व करना है. I need to do that one. So anyhow I have to make any other options to to solve these questions. So I choose their logarithm. But here also suppose अगर 1 को मैं √7 से, अगर ये 1/7 रहता था तो मैं इजीली डिवाइड कर देता था. करेक्ट? सही है ना? But Yes. But because of this √7 I can't easily divide there, so I have to say the alternative there. So ये जो √7 को remove करने का means if I make to change this √7 to 7, I have to do something. So what I can do, the process to make this irrational, ठीक है, जो irrational को rational में convert करने का जो process है, that process is called rationalization. करेक्ट? सो हमें क्या करना होगा? √7 को मुझे रेशनलाइज करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है, सिंपली आई हैव टू मेक इट एज अ √7 मल्टीप्लाई कर दे इसमें एक और. करेक्ट? सो √7 मल्टीप्लाई इससे के साथ ना करके मुझे ऊपर भी करना होगा. करेक्ट? सो √7 into √7 क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर, जिससे मेरा दिस स्क्वायर रूट विल कैंसिल. √7/7 will be the answer. Understand? Clear? Yes sir. Man? Yes sir. Yeah. So that process is called rationalization actually, and I told you that day also. So this is nothing monomial irrational number. Correct? Means एक ही term है rational number का, irrational का. So if you have two terms also, then that also we can do that easily. अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि 1/5 root under 5 plus root under 2. Yeah, 1 by root under 5 plus root under 2. Yes. Yes sir. आप देखो, अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा सपोज, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो स्क्वायर हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस वन? अब √2 तो एलिमिनेट नहीं होगा. क्लियर माय पॉइंट? अगर मुझे √2 एलिमिनेट करना होगा, आई हैव टू सी द अल्टरनेटिव कि ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना पड़े तो दोनों को स्क्वायर करते हैं. तो मैंने बताया था कि दिस इज द फॉर्म ऑफ a plus b. करेक्ट? इसको मैं मल्टीप्लाई करूं a minus b से, देन आई कैन मेक इट एज a स्क्वायर minus b स्क्वायर. दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकते हैं. क्लियर? आई कैन डू और नॉट? सो सिंपली हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन है तो √5 plus √2 है, आई हैव टू मल्टीप्लाई विद √5 minus √2 and divide by √5 minus √2. a plus b है तो a minus b. लेट इट बी √5 को a मान लो, √2 को b मान लो. a plus b ऑलरेडी था मेरे पास, तो आई हैव डन a minus b, जिससे मुझे क्या फायदा होगा? So I can multiply with 1, so I can simply write it as like that, and do a plus b into a minus b is called a square minus b square. So you can write it the formula here, a minus b into a plus b is nothing but a square minus b square. So this is nothing but √5 minus √2.
Root 5 a square cancel, a square root से a square cancel. So 5 minus 2. So what is the answer? Root 5 minus root 2, and 5 minus 2 is 3. So this is the answer for this. Okay. Yes, sir. Yeah. Anything else here? रब कर दिए इसको? Yes, sir. Okay. So understand what is the rationalization there? Yes, sir. Yeah. Oh. So any doubt? Sir, one more doubt is there. Tell me. Whatever doubts, just take out there. Simple. कोई problem नहीं है. हमारे पास time है. Tell me. So the question is to find four rational number between 1 minute, sir. Four rational number between 1 by 5, 1 by 7, and 1 by 10. Find the four Sir, rational number. yes, Okay, find the four rational number. sir. It is the question of Pankaj Agarwal. No problem. Pankaj Agrawal. Find the four rational number. Correct. Yes, sir. Four rational number between which one? Between? Sir, there is. I don't have book now, but this question I have seen on my friend's book. No problem. Question जैसे किसके बीच में? कोई भी नंबर के बीच में. करेक्ट है. कोई नंबर तो होगा ना, जैसे हमने 8 में पढ़ा था. 8 syllabus is there. When you are having any rational number like 0 से 1 के बीच में, मुझे 10 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, whatever numbers I can find. फिर कोई भी नेगेटिव टू कोई पॉजिटिव के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, that also we have done. So if it is fraction is there, no issue. अगर फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन आइदर हो सकता है कि सेम डिनोमिनेटर का हो, या ये भी हो सकता है कि इट कैन बी ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का हो. That also possible. Correct na? So if it is this type of things are there, simply what you can do, अगर different है, let it be, if I am saying 2 by 3, so 3 by 5, let it be. ठीक है, 2 by 3 और 3 by 5 के बीच में. So पहले हमें क्या करना होगा? We have to make it the same denominators. Correct. So 3 और 5 का LCM होगा 15. So here I have to multiply with 5. Here I have to multiply with 3. So 10 by this is 15. ये 9 by 15. तो actually बड़ा ये है. So I can change it like that. 9 by 15 to 10 by 15. Correct. अब मुझे इसके बीच में 4 नंबर चाहिए, या 5 नंबर चाहिए, या 6 नंबर चाहिए, या 10 नंबर चाहिए, या 20 नंबर चाहिए. So what I said, suppose if I multiply with 10 here, both the side, कुछ फर्क, कोई changes? No, sir. Correct. So I can do 90. 15 into 10 is 150 to 100 by 150. In between 90 by 150 to 100 by 150, so many numbers are there. 91 by 150, 92 by 150, 93 by 150, yeah, 94 by 150. So many numbers are there. If you need more, just multiply with 100 here. Simple. Clear? Understand? So that is the reason actually I am saying for all students, try to understand the thing. See, this is there in the first chapter of the rational numbers in standard 8 here. Okay. Suppose if you understand that time, there is no issue with that. Sonal, understand this one. Sonal, is it clear to you? Yes, sir. Yeah. Okay. Fine. So tell me, any other doubt regarding topics? Sir, वो वाला physics वाला question बता दे. No, sir. I have a question and doubt. Tell me, beta.
Sir, use factor theorem to prove that x plus a is a factor of xn plus an for any odd positive integer n. See, use factor theorem. Correct. To prove x minus a is factor of X plus a is a factor of okay, x plus a x is a plus factor a. of x to the power n plus n to the power a to the power n. yeah. Yes, sir. Say For any odd positive integer n. any odd means n is odd positive integer. Correct. Yes, sir. Yeah. So simple. If I say take an example, like suppose if I'm doing so for n equals to 1. Okay. If I'm taking n equals to 1 because they mention as n is a positive integer. Odd number. n equals to 1 है तो मुझे x to the power n की जगह पे क्या करना है 1 सब्स्टिट्यूट करना डिवाइड बाय x plus a. Is it divisible? Correct. Is equal to 1 क्यों किए हैं? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा x plus a divided by x plus a both will Yes, sir. cancel. Yes, sir. Correct. If I n equals to 3 odd integer they are saying I can't choose 2. Correct. Yes, sir. Yes, sir. Odd integer बोला है I can't choose 2. So let it be x to the power 3 plus a to the power 3 divided by x plus a. Correct. So as we have learned in the identities, a cube plus b cube can be equals to a plus b, a square minus ab plus b square. Correct. Yes, Okay. sir. So simply we can write it as a x cube plus a cube is nothing but x plus a, x square minus ax plus a square divided by x plus a. So simply I can cut it this also. So यहाँ भी तो divisible हो जा रहा है. Correct. If I'll choose like Yes, that sir. another one also. Correct. If I'll choose another also, so like that, or similarly, you can write it like that. Similarly, okay. Similarly, for all positive in odd integers, x plus a can completely divisible. So x plus a is factor of X per power n and plus a per power n. Yes, sir. sorry. Yes. Simple thing is there. You need to just think on that. Okay. अगर कभी भी अगर ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, just take an example there, small example, and try to solve it out there. और उसमें and already mentioned you have to choose any one options to make this proof, or you have to choose only one option to make proof here. अगर बीच में कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें प्रूफ नहीं हो रहा, then you can satisfy those things. ठीक है? Yes, sir. Yeah. So anything else on that? Yeah, Pragya is saying something that time. I think your voice is not audible. Yes, sir. Tell My me doubt now. is visualize 3.75 on the number line using successive magnification. 765. 3.765. 3 digit is there after decimal. Yes, sir. Yeah. So visualize, and that day only I say visualizations is nothing but extension, stretching of the number there. Correct. So stretching कैसा होता है? Just simply see here. If it is I am saying 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 like that. Okay. So
अगर मैं नॉर्मली कोई चीज बनाता हूँ इंटीजर, इफ आई एम प्रिपेयरिंग द इंटीजर 0 से 1, mostly I can write it as a here suppose 0.1, 0.2 up to let it be 0.9, 10 लाइन में खींच सकता हूँ। क्या मैं कहीं पे किसी भी ग्राफ पेपर में इसके बीच में कभी देखिए कि 100 लाइन हो या 50 लाइन हो या 1000 lines are there in between any two in centimeters there, we can't there, correct? So हमें क्या करना है, हम इसको स्ट्रेच करना है। ये भी तो हो सकता है कि मैंने 0 और 1 को suppose here still number is there, so I just write in 0 and 1 here, correct? And I am just 0.1 यहाँ पे जो छोटा दिख रहा था, I am giving some space here, correct? 0.2 up to suppose 0.9 and we are getting 1 here, correct? तो इससे क्या हो गया, अब 0.1 और 0 के बीच में still I can draw 10 lines there, correct? Understand? अगर मुझे Yes. इसके बीच में और स्ट्रेच करना होगा, लेट इट बी, एक और स्ट्रेच करना होगा, so I can simply write it here ना, ये 0 and here 0.1 numbers are there still after that. Again 0.1, after that I can write as 0. What I can write there? 0.01, Yes. correct? Up to कहाँ तक मैं लिखूंगा 0.02 और ये जाएगा 0.09 तक जाएगा, then we can get it 0.1. So each time what happening here, the decimal terms are increasing. यहाँ पे 1 डिजिट में था, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं था, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे आया, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे आएगा। हम जितना स्ट्रेच करेंगे उस चीज को, ये नंबर ये जो पॉइंट है वो उतना स्ट्रेच होते जाएगा जिससे वो चीजें क्लियर दिख जाए। सो कभी कभी होता है ना कि व्हेन वी क्लिक सम फोटोग्राफ देयर एंड बहुत सपोज ग्रुप फोटो है, ठीक है, एक ग्रुप फोटो है, दैट इज स्कूल फोटो इज देयर ना, स्कूल क्लास फोटो इज देयर, ठीक है। स्कूल फोटो में सपोज दूर से तुम्हें नहीं दिख रहा है, तब क्या करते हो यार, जस्ट अगर फोन में है, पेपर में तो फाड़ नहीं सकते, करेक्ट, पेपर में तो नहीं फाड़ सकते, बट अगर फोन में है then we can zoom it out there na, understand? So that Yes, zooming sir. we are doing here for the numbers, understand? That numbers we are doing just zooming for Yes. those numbers, understand? So how we can draw this one? Now see your question answer here, okay? So see here, first number 3 to 4. So how many times you have to do stretching there? Simple. How many digits are there? 4 digits are there, correct? So at least 4 times you have to do stretching there. So first stretchings that will happen between which numbers? So 3 point something. So that number must be, let it be 0. This is a positive number. So don't focus for the negative side more. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and it will go like that. So you have to point which part? इसको stretch करना है। Between 3 and 4. I have to stretch how much? ये 3 to 3 to 4, correct? इसको थोड़ा इधर कर देते, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? You can put it here or here. You are stretching 3 more. अब 3 के बाद क्या करना है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 40, correct? So now Yes. 3.7 after some number is there, correct? 3.7 after some numbers is there means you have to stretch which number? 3.7 to 3.8, 3.8. correct? Yes. 3.7 to 3.8. So अब क्या करना है? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.7980, करेक्ट? सिंपल। अब ये 3.7 के बाद 6 पे है,
6 के बाद भी फिर स्टिल नंबर इज देयर, करेक्ट? तो 3.676 आफ्टर 3.76 एंड 3.77 को मुझे फिर से स्ट्रेच करना हो, करेक्ट? दिस विल बी योर 3.76 to 3.77. Understand? So now again 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.767, 3.767, 3.768, 3.769 and 3.770, correct? So which number is that? 3.765. Where is that number? 3.765. So this number is here. Just round it that number and mark arrow here and put it here. 3.765. Okay? Yes, sir. Understand this one? Yes, sir. So we have to do like that. Yeah. You have to do stretching like that. मतलब हमने क्या किया है, 3 और 4 को खींच के यहाँ तक ले गया, बड़ा किया, फिर अंदर के नंबर दिख रहा है, फिर हमें पता चला कि 3.78 को फिर तो हमने खींच के बड़ा किया, फिर उसके अंदर का छोटे छोटे नंबर दिख गया, फिर हमें पता चला 3.76 के बाद 3.77 को और खींचना है. वी हैव डन एंड वी फाउंड दैट नंबर्स हियर. ठीक है? So this is the way we can represent. And one more thing, ये जो नंबर है यहाँ पे जो एरो जा रहा है, you have to keep dotted like that. Still some number is there. Correct? So make the dot like that. Okay? Understand? This is a integer line. This is an integer line that will go continuously there. Okay? Understand? Pragya? Yes, sir. Yeah, fine. Yeah. So any other questions? Board is visible clearly, no? Correct? Yes, Yes, sir. visible. Yeah. Okay. Yeah, Rani, your questions? Rani, no doubt. No, sir. No doubt. So should I ask the doubt? Sir, No, sir. I am searching. You have doubt. So ask me there. No? Why are you stopping there? Abhinav is also asking some doubt. Yeah. yes, sir. But sir, the question is the 3 to the power 4 3. 3 to the power 4 3. Okay. If log logarithm If log logarithm logarithm is 10 to the power 3. if log के बाद में 10 to the power 3. Yes, sir. 10 to the power 3 Yeah. is equal to Equals to 0.477 477 12. We will not like Sir, that. then- This will be like that only. Sir, this like this only. ठीक है? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Log of base 10 No, sir. of 3. That value is Sir, if 3.77. sir question हाँ. Sir, question is like this only. If log is the 10 to the power 3 is equal to 0.2, how many digits till? Actually, if base is not there and you're writing 3 here, correct? 10 to the power 3. That means these are base. This logarithm base is 10. Log of base 10. Correct? Yes, तो ऐसे sir. ही हो जाता है ना, 10 to the power 3 को हम पावर में लिखना है तो क्या कर सकते हैं? 100 ना?
Yes, sir. of 1000 बेसिकली अगर 10 के पावर में लिखे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसका आंसर? 3 आना चाहिए. But you are saying this value, Yes. this value for the log base 10 of 3. ठीक है? This value is log base 10 of 3. So see, you are saying this thing simply. Saying this thing simply means to find the value of this one you are asking, na? 3 to the power Yes. 43. No, sir. How many digit till 3 to the power 43 ends? How many digits? Say simply that is from the I think aptitude questions guide. So digit निकालना हो Yes. तो how we can find it there simply. अगर 2 का स्क्वायर जैसे करते थे हम लोग, जैसे you have seen in the 8th classes, correct? 8th क्लास में क्या था कि अगर कोई भी पावर का हम स्क्वायर करते थे, so how much? अगर 2 डिजिट नंबर का है, we are getting almost 1 digit या 2 digit, like maximum 81. कितने डिजिट आ रहा है? 2 digit. 2 डिजिट, करेक्ट. 1 डिजिट का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो मैक्सिमम 2 digit, and this power of 43 around. So what we are doing actually, we are just making them more multiplied with those numbers. So simply 43 is there, means how much we can find? Sir, it is there is formula. Simply the formula will be there. This is not the question from the NCERT simply. So these are from the competitive questions there. Okay. Yes, sir. तो पहले लॉगरिथम पे आ जाओ, फिर then we can see that one. लॉगरिथम का रूल्स है, जैसे अगर जो 0.43 है ना, ठीक है, यहाँ पे हम मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का वैल्यू देख के then we can predict how much terms will be there. जैसे मेंटीसा अगर यहाँ पे 0 है, तो your power will be in the form of this 0 plus 1 means 1 power में आएगा, means 10 to the power 1 के फॉर्म में. अगर मेंटीसा में यहाँ पे 3 है, 3 point something you are getting, फिर 10 के पावर में 3 plus 1 you are getting, means 4 power में आंसर आएगा, 10 के पावर में 4 में आंसर आएगा. It's like that actually. Okay. So one show just confirm with those questions and then we will discuss it again. ठीक है? Yeah, sir. Can you share my video? Which one? Sir, please show my video. Video. Yes, sir. I didn't get video means. ऐसे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन का? एक काम करो, keep it in that this one. 1 minute. वही तो किया है बेटा. ये क्या है? 3 to the power 43. How many digits till 3 power 43 can be? तो सेम वही चीज तो है. वही चीज तो है. means say this value already they mentioned there. वो जो नंबर ऑफ डिजिट निकालने का तरीका वही है. So what they have done simply, they applied the law that I am saying to find the 343. एक्सपोनेंट्स में जैसे अगर मुझे चाहिए बेस की पावर 43 है, 343, so a to the power n है, log of base a, suppose you are getting b to the power n is there. That formula is what? This n will be multiplied this side, so n of log of base a of b. Understand? Yes, sir. So that they have mentioned, like 43 is there, this 43 will come here, and log base 10 of 3 they mentioned here. 0.47 जो था वो log base 10 3 का था. Understand? So this if you multiply with 43 into 0.477 like that, simply you can get it the value like that. Sir, नहीं आ रहा सर उसका एक्यूरेट. क्या नहीं है? इसको आप करिए ना सर, मल्टीप्लिकेशन आप करिए ना सर, नहीं आएगा. 23 नहीं आएगा, लेकिन 23 आंसर. If you multiply, simple thing है. 4.77 है, 4.77 around, because digit you can't make it a half, no?
डिजिट अगर मुझे लिखना होगा कि 0.132 है, अगर वो डेसिमल में आ रहा है, उसका डिवीजन डेसिमल में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, हम नंबर ऑफ डिजिट वी नीड ना, करेक्ट। सपोज 42 point something you are getting here, some decimal value you are getting, you need to find a digit here. Digit must be you can just make it one more, 43. इसका मुझे लगता है कि 4.77 है, nearly about half, करेक्ट ना? Yes, sir. nearly about half. 43 का half क्या होगा? 22 point something. Yes, sir. 22 point something is around what? Simply 23, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, ठीक है। डिजिट तो कंफर्म नंबर इंटीजर ही होगा ना, नंबर ऑफ डिजिट अगर मैं मेंशन करूंगा। कभी कोई बोलता है कि डिजिट 5.5 डिजिट है, 5.5 डिजिट का क्या समझ में है? 6. Okay, tell me the next one. So logarithm, I already mentioned those value there. Once try to understand that, तब अप्लाई करने में मजा आएगा. So whatever the question they are asking there, see, ये एक बात मैं तुम लोग बता देना चाहता हूँ. Simply thing is what, NCERT and competitive, ठीक है, both are means so many differences there in that. यहाँ हमें कॉन्सेप्ट बेस पे चलना पड़ता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड ऑल प्रोसेस, टोटल प्रोसेस आई नीड टू मेंशन हियर. हर एक स्टेप्स हमें शो करना पड़ता है कि हाउ यू आर गेटिंग देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट. बट इफ कॉम्पिटिटिव इज देयर, इफ यू आर आस्किंग, सपोज मुझे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन देना होगा, लेट इट बी फॉर 40 मार्क्स क्वेश्चन, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 2 आवर, करेक्ट. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है 1 आवर का. So is it possible to do that all 100 questions by this means theoretically way as the NCERT is doing? Correct. Simply यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टकट ही होता है, उसको तुम्हें प्रोसेस से मतलब नहीं है. They need the solutions. हो सकता है कि 43 तुमने, जैसे 43 का पावर, मैंने वही तो बोला था कि अगर उसको मैं नंबर ऑफ डिजिट लिखूंगा तो सिंपली क्या होगा, ऑलमोस्ट अगर मैं 1 डिजिट का मैं स्क्वायर करता हूँ किसी का, तो आइदर हाउ मच आई एम गेटिंग हियर, सिंपल कितना मिल रहा है, कितना हो रहा है, 1 या 81, करेक्ट. आइदर एक डिजिट आ रहा है या 2 डिजिट आ रहा है, तो मैक्सिमम हम 2 मान के ही चलते हैं. वहां पे 43 डिजिट ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग है, तो उसका हाफ ही तो नंबर ऑफ डिजिट हो सकता है उसका, करेक्ट. सो वी कैन गो लाइक दैट आल्सो. एक प्रोसेस है that you have, we can't merge competitive classes with NCERT classes. Okay, don't be confused in that. अगर तुम कॉम्पिटिटिव हिसाब से अगर तुम NCERT में लिखोगे तो तुम्हारा पूरा मार्क्स काट देगा, सिंपल सी बात. Sir, without actual division means? Without actual division, without actual division in the sense they ask you to do the normal division, correct. G of x ऐसे नॉर्मल डिवीजन तो यही होता है, clear? Yes, sir. 1 minute. Yeah. So now audible, board is visible there? Yes, Okay. sir. Yeah. So normal division तो ये होता है g of x divided by t of x. Yes, sir. अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये दिखेगा नॉर्मल डिवीजन, और हम बोलते हैं इसको, एक और मेथड बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड और नॉर्मल डिवीजन, सिंपल. ओके. और एक दूसरा निकल तरीका होता है डायरेक्टली बाय रिमाइंडर थ्योरम. मींस व्हाट यू हैव टू डू, इफ p of x having some expressions and g of x are having in the form of suppose x plus a, so simply you have to do x equals to minus a. तो हम क्या करें, डायरेक्ट x के जगह पे माइनस a सब्स्टिट्यूट करके कुछ वैल्यू निकाल देंगे. So that is the process for what
means remainder theorem or factor theorem process without actual division. Yes. Yes. Understand? Yes. Yeah. So next one, Yes, sir. Rani, where is she? Rani, what is Yes, the question there? Sir, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, and S are the middle point of the sides AB, BC, CD, and DA. AC is a diagonal so that. I didn't get once. Tell me once more. Sir, ABCD is a quadrilateral. NCRT 8.2 question number 1. NCRT 8.2. Which book? NCRT Means 8th or 9th? 9th. 9th. 1 minute. Okay. But which exercise you have said? Sir, from 8.2 question number 1. 8.2. Chapter 8. What is quadrilateral? 8.2 question number 1 or 2? Sir, 1. 1. Okay. ABC is a quadrant in which PQRS is the midpoint of side AB, AC, and this one. Show that SR is perpendicular to AC, okay, and SR is half of AC. Okay. So simply what they have done there, क्या करना था? Simple. I think उसको ABCD is correct. फिर 1 minute. Yeah. So 3 questions are correct. SR is perpendicular to AC. So like this line is perpendicular parallel to this AC. This one they have to prove. And one more thing, SR is a half of this AC. That and PQ means this one. What is visible there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So क्या sorry, call आया था. Okay. So see office number 1. See office number office. See, so what you have to do simply है क्या कर सकते हैं इसको अगर हमें करना होगा तो they already mentioned D this P this these are the midpoint of DC, correct? If it is a midpoint of DC, then we can do one thing. See, एक थ्योरम है, आई थिंक यू डिडंट टॉट दैट थ्योरम्स देयर, ठीक है? एक मिड पॉइंट थ्योरम बोल के आता है which is there in the 9th class, okay? ठीक है? एक मिड पॉइंट थ्योरम. आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. या सो एक मिड पॉइंट थ्योरम आता है. मिड पॉइंट थ्योरम्स में क्या कहते हैं? सिंपली एक ट्रायंगल है,
that is there in the triangle. Okay, A, B, C. Okay, in the triangle कि अगर कोई भी दो लाइन का मिड पॉइंट, any two lines, if mid points are joining like that, this length of this one, if this P and Q are there, if length of this PQ is half of this BC, that is the by midpoint theorem. Okay, when things will be there, then we will discuss out there regarding midpoint theorems. ठीक है, कि कैसे प्रूव करना है. Okay, so इसका क्या रहता है कि PQ जो भी mid points है, अगर this P and Q are the mid points there, so simply this length will be the half of this one. यहाँ पे भी वही दिख रहा है, करेक्ट. अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल की, ठीक है, ये ट्रायंगल की बात करता हूं जिसमें ACD triangle ACD, already S and R is the midpoint of these two sides, so obviously this will be the half of AC, correct? Understand? This will be the half of AC. अगर यह AC है तो फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिख लेते हैं, ये भी ये ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल, तो अगर नीचे वाला ट्रायंगल है, 1 minute, I'll just make it fast. Yeah. So अगर नीचे वाला ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल भी तो वही है, this side and this side, ये P and this one Q are the midpoint of this one AC. तो simply हम क्या कर सकते हैं, SR equals to half of AC, correct? That will be question number 1, and PQ equals to half of AC. So simply if I am comparing question number 1 and 2, I can write it as SR equals to PQ, correct? So this can be done by, let's say, midpoint theorem there. So that actually there in triangles. So when we start the triangle there, then we come to know on that. What is the midpoint theorem? So how we can conclude that one? इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन करके पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, like that. Okay, and they prove the by the comparative ये एंगल और ये ट्रायंगल दोनों. Sir, you are not audible. So simply opposite sides are same. So ये side दोनों equal है. So this will be equal to AC, correct? This is equal to AC. Simply what I can do, अगर ये दोनों AC के equal है, तो this part, this half of both two parts से connect कर दे तो ये AC बन रहा है. उसका आधा obviously that will be the half of this, which is there in the midpoint theorem. Okay? Understand, Rani? Yes, sir. Midpoint theorem once, and then tell me which part you not understand, then again we will see on that. Okay, yeah, tell me now another one. Palak, you don't have any doubt now? Rani, Abhinav? No. Abhinav, no doubt. Yes, sir. Allowed. Sir, question is, sir, may I ask? You can ask it. No issue. Sir, log. Sir, you can write the question. Sir, you are not audible. 1 minute, beta. 1 minute. Just tell me. Tell me again. Sir, log. Log. Sir, base 2 है. Base 2 and 16. यहाँ पे 16. Yes, sir.
क्या सर बस करना है? यही क्वेश्चन। सॉल्यूशन करना है। सिंपल यस क्या सर। बोला था मैंने, मतलब इसका पावर वैल्यू में निकालना है, 2 के पावर फॉर्म में 16 को करना है, तो क्या करना है, कितने पावर में आएगा ये, 4, करेक्ट। So log of base 2 to the power 4, can I write 16 as 2 power 4? ये Yes. पावर इधर आ जाएगा 4, log of base 2 of 2 which is equals to 4. Okay? Yes sir. Yeah. Sir, you can tell about the बोला algorithm. और बेटा Sir, you can tell about the algorithm. algorithm, which algorithm? Sir, means introduction type. हाँ, Sir, introduction of algorithm. introduction of algorithm. What is algorithm actually? Algorithm is a process. Okay, algorithm is a process to find the something there. Like यहाँ पे Euclid algorithm is there. Euclid algorithm था ना first chapter में. We are having Euclid algorithm. So algorithm is nothing but process actually. इसका algorithm का मतलब होता है process, steps. Understand? Algorithm कोई topic नहीं है. This is a process name. Okay? Yes sir. Yeah. So Rani, Yes, sir. anything else you want me to ask? Yes, sir. Sir, construct the angle of 22 whole 1 by 2 degree. Construct The angle of angle of 22 22 whole 1 by 2 degree. 1 by 2. So this is Degree. nothing but how much? 45 Sir, degree. degree. हाँ? Yes, sir. How यही है to ना? construct? Yes, sir. पहले क्या करना है? सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से 45 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है? 45 डिग्री ड्रॉ करने आता है ना सिंपली? Yes, sir. हाँ, तो 45 डिग्री ड्रॉ करना है, देन एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ एंगुलर बाइसेक्टर. ओके, एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है? इट विल मेक इट हाफ. सो हाउ यू कैन डू दैट? कोई भी 2 पॉइंट पे मार्क करना है और यहाँ से ऐसे काटना है, फिर इधर पॉइंट से ऐसे काटना है. इट विल मेक इट दिस वन जॉइंट. Sir, how we draw angular bisector? एंगुलर बाइसेक्टर का जैसे मेरे पास ये एंगल हो गया, ठीक है? सपोज वन, लेट इट बी, दिस इज O and this is A. One ray, another ray, let it be OB. यहाँ पे एक एंगल बना है, ठीक है? Yes, sir. Yeah. So this is the angle. Now what you have to do? कि कोई भी anything, any size, just take a compass and take any size and draw one arc by keeping here this point, vertex point. एक arc draw करो, ठीक है? इनकी ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ठीक है? हाँ? Sir, without हाँ, measuring. without measuring, without measuring. Yes, yes, without measuring them. Okay, draw any arc like that. अब क्या करना है? फिर कोई भी साइज का कंपास में दो and just draw, putting your compass needle here और पेंसिल से ऊपर एक मार्क करो by putting here. Let it be, this is a point P Q. पहले क्या करना है? O पे रख के ये आर्क बनाना है, ठीक है? ये आर्क बनाने के बाद दिस विल बी टच एट P पॉइंट एंड Q पॉइंट सर, ऑन दिस आर्क जो होगा P और Q दोनों से टच होगा. हाँ, P और Q तो मैंने टच होने के बाद दिखाया था इस रे पे. जहां जहां कट किया है वो आर्क ने, उसको मैंने नाम दिया है, दिस इज P, दिस इज Q. ओके, ओके. अंडरस्टैंड? ठीक है. अब यहाँ से P से एक कंपास निकल देके क्या करना है? एक दूसरा आर्क यहाँ के बीच में ड्रॉ करना है.
करेक्ट। और सेम आर्क को फिर Q से क्या करना है, विदाउट चेंजिंग दैट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जहां P से लेके तुमने जो आर्क बनाया है, जितना डिस्टेंस लेके सेम डिस्टेंस को Q से वो आर्क को कट करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर ये जो जहां दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को O से क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, so this is total is 45, so this will be how much, 45 by 2, Yes, you are 22 and a half. Okay, understand? yes, sir. Yeah, so see, Abhinav, you can't mix NCERT and the competitive examination, correct? Don't mix those things. If you mix, So you taught see, you can learn the logic from the competitive examination. Yeah, what I'm saying, you can read the logic from the competitive examination, but you don't do the how you are doing for the competitive exam, and the same you can't do for the NCERT exam, correct? So that's why some students, those who are preparing for, those students who are preparing for IIT JEE and NEET, जो नीट और IIT JEE के लिए प्रिपेयर करता है, कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ये क्लियर हो जाता है एंड दे विल फेल इन 12th एग्जाम। CBSE का जो 12th एग्जाम होता है उसमें फेल हो जाता है, they will pass this exam and then fail in this exam, 12th exam. That means the same concept we can't apply for that competitive exam in the NCERT exam. Okay, you can learn, no issue, you can ask any questions there, but keep it in mind those things. Understand? yes, sir. You taught this topic in the class now, so I thought I read about this. No issue, no issue, no issue, no issue. I just make you to teach for that logic there. Suppose if you are getting such questions in your suppose NCERT, so at least you should to know the things behind that. Suppose if I didn't say the things, suppose what is logarithm, understand? And if you are getting questions like that, the logarithm involved, so how you can tackle those things? So being a teacher, I need to make you understand these things correctly. At least you can attempt the questions. Okay? Yes. Yeah. So okay, everyone. So next class is there again from, I think Monday is there, correct? So till then, just to see why we are keeping, because we have to give the all classes for subject, and basically for, I think we are looking for the physics also. Okay. So just collect your doubt according to that. So do continuous practice and collect the doubt, mark those doubt there and ask it again. Okay. Okay, everyone. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you, everyone. We will see it again in the next one. Okay.